So उस्मान जरा मुझे फीडबैक दे दो। ठीक है, yes sir, perfect, सही है। Anyone else यार before I get started? ठीक है। हाँ Riha, when you compare AS with A2s यार, there is a significant difference. But I'm sure Riha, it applies to chem, bio, everything I guess. Maybe not so much so in math. लेकिन I think sciences के अंदर तो there is a very steep curve moving from AS going on to A2s. हाँ, maybe you are right. But I'm sure bio में भी होगा. I think I don't think you take bio, or maybe you do. I have a feeling आगे जाके bio में तो I think the syllabus is bio is probably the lengthiest out of all sciences. हाँ, I'm sure later on जाके bio kind of मुश्किल होता जाता है. हाँ, I guess you're right कि lengthy तो definitely है. Alright यार, so ठीक है. तो यार आगे की वर्किंग आज स्टार्ट करा दूं. So let me just quickly go through with the formulas that we did in the previous class. So यार ये वाले सारे formulas हमने कंप्लीट कर लिए थे. आप कोशिश करके याद भी रख लेना यार. So the first result was displacement as a function of time. The second result was velocity as a function of time. Our third result was acceleration as a function of time. And then the fourth result was the basic formula for any particle executing simple harmonic motion. तो यार पहले ये वाले 4 रिजल्ट्स हमने किए थे प्रीवियस क्लास के अंदर. Okay, then we had also recognized कि displacement की maximum value can be represented as follows: plus minus naught. Velocity की maximum value was given in the form plus minus x naught omega. Acceleration के लिए the maximum value was given in the form plus minus x naught omega square. Hopefully Heather, yes. तो ये 3 रिजल्ट्स आ गए थे. So this is equation 5 हो गया, 6, 7 और इसके बाद एक आंसर और भी किया था. So the last result was a function of velocity in terms of displacement. तो ये फाइनल रिजल्ट था. मैं थोड़ा सा सिंबल्स आपको दोबारा से आइडेंटिफाई कर दूं, फिर आगे प्रोसीड कर जाता हूं. So omega in this case was the angular frequency. X naught was the amplitude. X was displacement at any instant, and V was velocity at that instant.
ठीक है, अब यार आगे के फॉर्मूलाज करना है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इफ आई नीड दीज रिजल्ट्स तो मैं स्क्रॉल दोबारा कर दूंगा ऊपर, बट फॉर द टाइम बीइंग तो यार मैंने सारे के सारे रिजल्ट्स 1 through 8 जो प्रीवियस क्लास में किए थे ना वो सारे लिख दिए हैं। ओके यार, हुजैफा इज आस्किंग should we just remember the formulas and not the derivations? तो हाँ यार, remember in the first class I said कि जहां पर derivations required होंगी ना, मैं वहां purposely mention करूंगा कि you have to learn the derivation. So for all of these formulas, let me just mention it somewhere before I proceed. So for all of these formulas, they don't ask for the derivations. तो हुजैफा सिर्फ formulas learn करने वाला काम करना है। ठीक है, फर्दर आगे मूव करते हैं। तो यार अब अगली चीज जो डिस्कस करनी है, थोड़े से और फॉर्मूलाज हैं। सो 8 फॉर्मूलाज फ्रॉम बिफोर, और अभी थोड़े से और फॉर्मूलाज डिस्कस करने हैं। सो दिस इज formulas for calculating kinetic energy, potential energy, and total energy. तो 3 रिजल्ट्स करने हैं। For a particle of mass m performing simple harmonic motion. Now you can take any particle, for example. So the first thing to recognize is based on law of conservation of energy, comma, for an oscillating particle, its kinetic energy can interchange into its potential energy, but the total energy at every point will remain constant. ठीक है, तो अब फॉर्मूला की डिस्कशन कर लेते हैं। सो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूं, इसके बाद फॉर्मूलाज लिस्ट कर देता हूं। आई एम श्योर यू वुड एग्री कि imagine if I were to consider a pendulum to be my oscillating particle. So I'm constructing the mean position and the extreme position. इसके बाद फॉर्मूलाज स्टेट कर देता हूं। So you should expect कि mean position के ऊपर the kinetic energy is going to be maximum. लेकिन जैसे ही आप एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचोगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। So this diagram kind of gives you the evidence of the fact that energy can interchange from one form to another form. So mean position पे you would expect the value of kinetic energy to be maximum. Extreme position पे जाके kinetic energy 0 हो जाएगी और potential energy maximum हो जाएगी।
तो इनके फॉर्मूलाज एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। यार इसमें 5 रिजल्ट हैं, सो इसकी भी डेरिवेशंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो लेट मी मेंशन दिस टर्म फर्स्ट। तो सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। मैं रिजल्ट लिखता जा रहा हूं, तो आप जरा ये रिजल्ट्स कोशिश करना साथ साथ याद भी हो जाए, क्योंकि अभी एग्जाम्पल्स कराने होंगे ना, तो फिर फॉर्मूलाज बार बार चाहिए होंगे। ओके, सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैं सिंबल्स फिर एक साथ मेंशन कर दूंगा, हो सके तो फॉर्मूला याद रखें। तो यार ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। इफ आई फॉलो द सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल नंबरिंग, तो बेटा मैंने टॉप पे 8 फॉर्मूलाज की लेबलिंग कर दी थी, तो मैं उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये आपका 9th रिजल्ट हो जाएगा। आई विल मूव ऑन टू द सिंबल्स इन अ बिट। ठीक है, तो मैं सारे सिंबल्स को एक साथ आइडेंटिफाई कर दूंगा। रोहेल इज सेइंग मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, दैट इज व्हाई काइनेटिक एनर्जी आल्सो मैक्सिमम। हाँ रोहेल, योर स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होती है, कॉन्सिक्वेंटली काइनेटिक एनर्जी भी ग्रेटेस्ट होगी। सही। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट इज द जनरल फॉर्मूला। थोड़ी जगह नीचे है तो नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, सो टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट, देन वी कैन अप्लाई द जनरल फॉर्मूला। इसका भी रिजल्ट देख लीजिएगा यार। हाफ, मैं सिंबल्स अभी एक साथ आइडेंटिफाई कर दूंगा। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूलाज काफी सिमिलर हैं और एग्जाम्स में गिवन नहीं होते हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि यार फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली याद हो जाते हैं। सो दिस रिजल्ट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एट एनी गिवन पॉइंट। So this is basically the general formula for calculating the kinetic energy. So result number 9 was to calculate maximum kinetic energy, and this result to calculate kinetic energy at any random point, hence the term general formula. ये 10th हो गया। Moving on further, अब potential energy के results लिख रहा हूँ। So to calculate maximum potential energy, this is the result. Students generally do ask this question. हालांकि आई डोंट थिंक ये इतना वैलिड क्वेश्चन बनता है, बट जनरली वो पूछ रहे होते हैं कि सर हाउ कम रिजल्ट नंबर 9 एंड रिजल्ट नंबर 11 आर द सेम। और आई थिंक अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप जज कर सकते हैं ना, 9th और 11th वाला रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है। तो आई गेस इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर यही है कि सेम होना बहुत नेचुरल सी बात है, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज, दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन गेट completely converted into another form, which is why since there is no energy losses taking place, which is why maximum kinetic energy का formula and the formula for maximum potential energy are exactly identical. अच्छा, फर्दर आगे, तो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला इज, फॉर्मूले के बाद इसके ग्राफ्स करा दूं।
और ग्राफ्स के बाद इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है ना, उसको अभी डिस्कस कर लेंगे. सो द नेक्स्ट इज जनरल फॉर्मूला. सो जनरल फॉर्मूले का मतलब है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी रैंडम पॉइंट. लेट मी रिपीट वंस अगेन दैट द फॉर्मूलाज आर काइंड ऑफ सिमिलर. तो जरा ख्याल रखिएगा, किसी जगह x आ रहा है, किसी जगह x स्क्वायर आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. They don't provide you with these formulas in the exam, so it is expected कि आपको directly learn होने चाहिए. ये आपके पास रिजल्ट नंबर 12 हो गया. तो फॉर्मूलाज 1 थ्रू 8 हमने लास्ट क्लास में किए थे. 9, 10, 11, 12 are the formulas for kinetic energy and potential energy, maximum as well as general formula. और एक फॉर्मूला का रिजल्ट बच गया. So the final answer that is left is total energy. पहले वर्डिंग्स लिख लूं फिर फॉर्मूला लिख देता हूं. Since total energy is always constant, therefore ठीक है. So total energy के लिए we don't need two results, unlike in the case of kinetic and potential, because the fact that total energy at every point remains constant, तो इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट है. So ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया. I've tried to display them using different color codes ताकि थोड़ा सा आपके लिए लर्न करते हुए कन्वीनियंट हो जाए. So basically 5 formulas are 2 for kinetic, 2 for potential, and 1 result for obtaining the total energy. अब यार इसके सिंबल्स को मैं आइडेंटिफाई कर दूं. Okay, Shiza is saying, sir, the total energy can even have the same value with different equations though, right? Yes, you're right. All right. तो यार इसके सिंबल्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दूं. आई जस्ट थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूं ताकि आपको सारी इक्वेशंस एक साथ नजर आ जाएं. तो मैं सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर दूं. सो ओमेगा वंस अगेन angular frequency. M represents the mass of the oscillating body. X naught amplitude of oscillation. And X displacement at any given instant. So X represents displacement at any given instant. Omega is the angular frequency. M denotes the mass. X naught represents the amplitude of oscillation. इनको भी अप्लाई करना है, but before I move on to the application of these results, हो सके तो 9 through 13 जरा learn कर लेना. Before I move on to the application, इनके ग्राफ्स बनाने हैं. So मैं ग्राफ का काम पहले करा दूं, and then we'll see how do we apply these equations. So graphs of kinetic energy. ग्राफ्स काफी फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड शेप लर्न कर लीजिएगा ग्राफ्स का. ग्राफ्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
and total energy as a function of displacement x. एक सेकेंड यार. Sorry. So graphs of kinetic energy. Reha is saying, sir, can they ask us to make the graphs, or will there just be questions given related to the graphs? Nahin, they ask you to make a sketch of the graphs as well. In fact, Reha, all the working that we did in the previous class, हमने last class में भी graphs किए थे. So वो सारे के सारे graphs आपको आने चाहिए. So we did around, I don't quite remember कितने किए थे, लेकिन I think 4 to 5 या 6 graphs last class में भी किए थे. So सारे graphs के separate independent questions भी होते हैं. Okay, so graphs of kinetic, potential and total energy as a function of displacement x for a particle performing simple harmonic motion. ठीक है यार, तो 3 ग्राफ्स बनाने, काइनेटिक के लिए, पोटेंशियल के लिए और टोटल एनर्जी के लिए. I'll start with kinetic first. So once again, let me assume the oscillating particle to be a simple pendulum. I've marked the mean position and I've marked the two extreme positions. ठीक है, so I'm assuming that the particle is going to start the mean position is taken to be the reference point for the graphs shown below. I'll start with the kinetic energy first. Follow करते जाइएगा. So the vertical axis in this case represents kinetic energy. हुसैन, एक वर्डिंग में गड़बड़ है तुम्हारे. तुमने लिखा है कॉस वाला ग्राफ. इस पे मसला बस ये है कि हुसैन, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती हैं, है ना. सो टेक्निकली ये कहना कि कॉस वाला ग्राफ होगा वो गलत हो जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, एज यू कैन सी मैंने भी एक्सेस में कोई नेगेटिव पोर्शन नहीं बनाया, तो टेक्निकली कोसाइन वाली वर्डिंग जरा गलत हो जाती है. ओके, क्या शेप बनेगा वो देख लेते हैं. मैं रिपीट करते जा रहा हूं, आप जरा देखिएगा. फॉर द पोजिशन लेबल्ड एज ए, which is the mean position, you would agree displacement will be zero, and you would also agree that kinetic energy will be maximum. So if you are okay with the statement जो मैंने ग्रीन वाले मार्कर से लिखा हुआ है, तो मैं उसको पहले ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूँ. So when the displacement is zero, ग्राफ पे चेक करते जाइएगा. सॉरी यार, एक सेकेंड. हाँ, ठीक है. So for the point labeled as A, where the displacement is zero, we are expecting the value of kinetic energy to be maximum. So that point is going to be on the y-intercept. Kinetic energy maximum. अच्छा, बिफोर आई कंटिन्यू, हाँ, इन्वर्टेड पैराबोला की वर्डिंग रोहेल ने सही लिखी है. आयशा इज ऑल्सो राइट. पीक व्हेन एक्स इज जीरो. ठीक है. अच्छा यार, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप अ बिट. So we just worked out the value of maximum kinetic energy. If you guys are okay with that, मैंने हाईलाइट कर दिया है. So since we have the value ना from equation number 9, तो मैं इस वैल्यू को ग्राफ के ऊपर शो भी कर देता हूँ. आप याद कर लो.
half m omega square x naught square. I'll display this value on the graph. Half m omega square x naught square. ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया. अच्छा, अब एक्सट्रीम पोजीशंस को देख लेते हैं. So at one extreme position, I can call my displacement to be positive x naught. And for the other extreme position, दोनों को red से show कर रहा हूं, I can refer to my displacement as negative x naught. Both points shown with the red marker. And for these points, the kinetic energy must be zero. तो जो रेड वाले मार्क्स है ना, उनको मैं डायग्राम पे शो कर देता हूं. तो आप डायग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा. इट्स अ सिमेट्रिकल ग्राफ व्हिच आई एम अबाउट टू कंस्ट्रक्ट. On one side, the displacement is positive x naught, zero kinetic energy. So on the x-axis. दूसरा वाला point, negative x naught, again zero kinetic energy. So the point is on the x-axis. Graph compile कर लेता हूं. Sorry यार. ठीक है, तो यार ये वाला ग्राफ आपका बन गया फॉर द काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एक रिजल्ट आ गया. नाउ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आई गेस आप अग्री करेंगे कि सिंस काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर बोथ इंटरचेंजेबल, सो अगर काइनेटिक का ग्राफ आपका बन गया है, द वन शोन विद द ऑरेंज मार्कर, तो पोटेंशियल का ग्राफ एग्जैक्टली फ्लिप करके आ जाएगा, बिकॉज काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर इंटरचेंजेबल. सो एग्जैक्टली इन्वर्ट करके बना दूंगा. आई शो दैट विद सेपरेट कलर. ब्लू वाला शो कर देता हूं. तो पोटेंशियल का ग्राफ would be the exact reversal. तो जहां काइनेटिक जीरो थी ना, वहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगी. और जहां काइनेटिक मैक्सिमम है, वहां पोटेंशियल जीरो हो जाएगी. तो यार ये जो ब्लू वाला ग्राफ बन रहा है, एग्जैक्टली द रिवर्सल. दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी. मैं लेबलिंग साथ साथ कर रहा हूं. एक सेकेंड है यार, सॉरी. एंड फाइनली यार, रिमेंबर द फैक्ट कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. टोटल एनर्जी का भी बना देता हूं. सिंस टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, so its value is going to remain constant. मोहित ने पूछा हुआ है रीजन फॉर पोटेंशियल बीइंग फ्लिप्ड. यार isn't kinetic and potential, मोहित इस तरह से सोचो कि one form of energy gets converted into another form. So based on law of conservation of energy, जब काइनेटिक मिनिमम होगी तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, और जब काइनेटिक मोहित मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगी. तो इस वजह से मैंने कहा था कि पोटेंशियल का ग्राफ और काइनेटिक का ग्राफ एक दूसरे का इन्वर्ट बनेगा. ठीक है, अब टोटल एनर्जी का ग्राफ बना देते हैं यार. सिंस द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी इज सपोज टू रिमेन कांस्टेंट, ग्राफ पे शो कर देता हूं. थोड़ा सा हाईलाइट करके बना दूं. तो बेसिकली द आइडिया ऑफ टोटल एनर्जी इज कि अगर आप ऑरेंज वाले ग्राफ को और ब्लू वाले ग्राफ को एडअप करोगे, तो काइनेटिक और पोटेंशियल को जब आप एडअप करोगे, at every point the result is going to remain constant, assuming no energy losses. Consequently, it's a horizontal straight line.
ओके, अच्छा पहले मुझे इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछना है, तो मैं वो क्वेश्चन बताता जाऊं और फिर आगे प्रोसीड करता हूं. तो लेट मी ट्राई एंड इन्वॉल्व द इक्वेशंस अलोंगसाइड द ग्राफ. तो सपोज करें यार कि अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो, एक सेकंड रुकिएगा यार, मैं अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, तो इट माइट टेक मी अ मिनट और सो. ऑल राइट, सो एक एग्जांपल क्वेश्चन पहले देख लेना. फॉर द ग्राफ बिलो, मैं ग्राफ अभी बना दूंगा. कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी of the particle whose mass is 70 grams. Acha, second part, sketch graph of potential energy versus displacement on the same axis. Third part, मैं ग्राफ अभी बना देता हूं. Calculate the displacement x when the particle has equal amounts of kinetic energy and potential energy. Okay, so yeah, the graph is given to you. The vertical axis is for kinetic energy. The value is given to you in millijoules. The horizontal axis is for displacement. Its units are centimeters. ग्राफ का ये शेप गिवन है. -5, +5 and 16. सॉरी यार, ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इज गिवन. ठीक है. इन द फर्स्ट पार्ट you are expected to calculate the angular frequency omega where the mass of the particle is given to you as 70 grams. है ना? सो यार उमर, वो एक्चुअली मुझे नोटिफिकेशंस देखनी होती हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो मेरे काम की होती हैं, इसलिए मैंने ऑफ नहीं किया हुआ यार, बिकॉज वो स्कूल की तरफ से आ रही होती हैं. सो आई थिंक 6 नोटिफिकेशंस इन टोटल आती हैं, 4 हो गई हैं. होपफुली बाकी अब 2 शायद बाद में आएंगी. ओके, सो यार द ग्राफ इज गिवन टू यू एंड यू आर एक्सपेक्टेड कि आपको कैलकुलेट करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को. सो रिमेंबर फ्रॉम द फॉर्मूलाज जो अभी हम लोगों ने किए थे ना, सो आई एम बेसिकली रिफरिंग टू आई गेस फॉर्मूला नंबर 8, नहीं फॉर्मूला नंबर 9. मैं भी शो कर देता हूं दोबारा. दैट फॉर्मूला वाज फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी.
दिस वाज द रिजल्ट। ठीक है, तो इफ यू रिमेंबर तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू का ये रिजल्ट मैंने लिखा हुआ था। लेट मी जस्ट क्विकली गो बैक सो आपको मिल जाए। ठीक है, सो आई एम अगेन रेफरिंग टू दिस रिजल्ट। सही, ऑल राइट, अप्लाई करके देखते हैं। तो यार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस इज 16 टाइम्स, इट्स इन मिली जूल्स तो 10 टू द पावर ऑफ -3। आयशा यार अगर चांस मिले तो प्लीज फिगर आउट कर लेना आंसर। दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, बेटा मास वाज गिवन इन द क्वेश्चन 70 ग्राम्स, ओमेगा आपको फिगर आउट करना था, और एम्पलीट्यूड डायग्राम पर से देख लीजिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं तो आपको मिल जाएगा। सो दैट इज 5 सेंटीमीटर्स। So you were expected कि आपको ओमेगा की वैल्यू फिगर आउट करनी है। So I've used the formula for maximum kinetic energy. Aisha has given the answer 13.5. Aisha स्क्वायर रूट कर लिया था ना? Yes, ठीक है। ओके यार, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर यू आर आस्क्ड कि आपको स्केच करना था ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो आप डायरेक्टली बना लोगे बेस्ड ऑन द वर्किंग दैट वी जस्ट डिड। इसी पे हाइलाइटर के साथ स्केच कर देता हूं, आप आई थिंक खुद ही फॉलो कर लोगे। फ्लिप करके रिवर्स करके बना देना, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, काइंड ऑफ लाइक दिस। फिर यार थर्ड वाले पार्ट के अंदर यू आर आस्क्ड, ये भी वर्डिंग्स देख लेना। सो इन पार्ट 3 द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, यार यूनिट जो है ना वो पेपर्स में गिवन होते हैं तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वैसे तो होते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, है ना? सो आई थिंक रेडियंस पर सेकंड तो आपको याद होगा, हुजैफा हमने पहले किए थे। सही हुजैफा, तो ओमेगा वाज 2 पाई अपॉन टी। सो इफ यू रिकॉल तो हमने सर्कुलर मोशन में किया हुआ था रेडियंस पर सेकंड, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखे यूनिट्स। फिर यार थर्ड वाले पार्ट के अंदर यू आर आस्क्ड के कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एक्स when the particle has equal amounts of kinetic and potential energy. So basically they are referring to the intersecting point. Let me just highlight that on the diagram. So they're asking you कि यार आपको displacement की values calculate करनी है। Let me refer to the displacement as x and minus x. एक जगह बस x लिख दिया है, तो आपको बेसिकली ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है at which particles kinetic and potential energy are both going to be equal. सही? So इसके लिए this was the first part. सेकेंड पार्ट तो ग्राफ पे शो कर दिया था। और लास्ट वाले पार्ट की वर्किंग करा दूं। सो टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स व्हेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यार जो फॉर्मूलाज लिखे हुए थे ना, अभी उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। सो आई हैव द जनरल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड लाइकवाइज आई हैव द जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी एज वेल। दोनों को इक्वेट कर देता हूं। एक सेकेंड ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं। सो आई एम बेसिकली रिफरिंग टू दीज रिजल्ट्स। काइनेटिक का जनरल फॉर्मूला आई हैव अ फीलिंग वाज, अभी चेक कर लेते हैं। और आई थिंक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला वाज बेसिकली इक्वेशन नंबर 12। तो 10 एंड 12 की बात हो रही है। यस हुसैन, यू कैन राइट, हर्ट्ज भी सही है, कोई इशू नहीं है।
सो यार 10 एंड 12 वाले की वर्किंग करनी है। मैं ऊपर जाता हूँ ताकि दोनों फॉर्मूलाज मिल जाएं। ठीक है, जरा देख लीजिएगा, मैंने स्टेरिक बना दिया है। So the first result for general formula of kinetic, the second result, equation number 12 for general formula for potential. I'm hoping कि आपने equations देख ली होंगी, so I'll directly move on to the working. Kinetic का ये result था, half m omega square. Only the terms written with the red marker, as you would see, are of any relevance for me. क्योंकि black वाले सारे terms eventually cancel out हो जाएंगे. And the general formula for potential was this. ठीक है sir, basically copied down equation number 10 and equation number 12. From both the sides, आपके ये रिजल्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। लेट्स सी व्हाट विल वी एंड अप विद। सॉरी यार, कीप इन माइंड कि आपको एक्स फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख लूं। और बाद में वैल्यूज को प्लग इन कर दूंगा। सो अगर पॉसिबल हो तो ये वाला रिजल्ट जो मैं लिख रहा हूं ना बॉक्स के अंदर, आई थिंक इसको लर्न कर लीजिएगा। सो दिस आंसर इज बेसिकली टेलिंग यू, आंसर देख लें, मैं आंसर को नोट की फॉर्म में लिख लूं कि व्हाट इज दिस आंसर इंप्लाइंग। The above equation indicates that if amplitude x naught is divided by under root 2, the answer gives us the displacement x at which particles' kinetic energy and potential energy are both equal. तो यार मैं जरा कैलकुलेशन भी कर लूं। सो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूं ताकि आपको डायग्राम से एम्पलीट्यूड मिल जाए। सो जस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स द डायग्राम और मैं इसके साथ इसका आंसर लिख लेता हूं। तो डायग्राम के ऊपर आई थिंक यू वुड बी एबल टू सी that the amplitude was given to you as 5. If I use that result, अगर कैलकुलेटर हो ना तो जरा फिगर आउट कर लीजिएगा।
So amplitude, which in this case was 5, divided by under root 2. Whatever answer you get, this answer will give you the displacement of the particle at which its kinetic energy and potential energy are both going to be equal to each other. So 5 divided, Hussein ने लिखा हुआ है 3.5. मर्जिया, आई जस्ट मूव ऑन टू योर, सॉरी शाकिर, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर कर देता हूँ. डू वी कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स? यार एक्चुअली मेरे लिए मर्जिया इस वक्त रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज माई इंटेंशन वाज कि मेरे जो 3.5 का आंसर आ रहा है ना, मैं डायग्राम पे उसको शो कर दूंगा. सो आई गेस मेरे लिए इस वक्त कन्वर्ट करने की रेलिवेंस नहीं थी. सो द आंसर विच आई एम गेटिंग 3.5. ठीक है, आई वांटेड टू डिस्प्ले दैट आंसर ऑन द डायग्राम, इसलिए मेरे लिए शायद इतनी रेलिवेंस नहीं थी कन्वर्ट करने की. सही है, सो 3.5 ऑन दिस साइड and similarly minus 3.5, the same displacement on the other side. Okay, शाकिब ने लिखा हुआ था it's x square in the formula. Okay, शायद मैंने फॉर्मूले में कुछ अंडर रूट. यार शाकिब, मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर पा रहा कि तुमने क्या लिखा हुआ है. तुमने लिखा हुआ है it's x square in the formula. ओ पर्पल फॉर्मूला. शाकिब, मैंने यार इसको सिंप्लीफाई किया है. अच्छा, एक्स स्क्वायर, सही, आई गॉट इट. मैंने स्क्वायर मिस आउट कर दिया था. इज दैट व्हाट यू आर इम्प्लाइंग शाकिब? ऑलराइट, थैंक यू. वो मैंने स्क्वायर मिस कर दिया था. ठीक है. ओके यार, मैं 5 मिनट्स रुकता हूँ, फिर आगे की वर्किंग करानी है. सो देन आई कंटिन्यू ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट. आई डिडंट पॉइंट इट आउट. सॉरी सर, आई डिडंट पॉइंट इट आउट कॉज लास्ट टाइम यू सेड. ओ अच्छा. ओके. नहीं, दिस वाज अ जेन्युइन मिस्टेक ऑन माय एंड. वो मैं एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया था. ऑलराइट गाइस, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ. हाँ, डैम्पिंग अभी स्टार्ट करा दूंगा आदिम.
ऑल राइट, सो यार फर्दर आगे मूव करते हैं, दो चीजें और डिस्कस करनी है. सो द नेक्स्ट वर्किंग इन कंटिन्यूएशन इज graphs of once again kinetic energy, potential energy and total energy, similar to the graph जो अभी बनाया था, against प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के लिए बनाया था. सो प्रीवियस ग्राफ अगर आपको याद हो ना, तो हमने डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट तीनों के ग्राफ्स प्लॉट किए थे. सो नाउ वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी against a function of time. So the graph constructed earlier on was for different forms of energies as a function of its displacement x. And the graph that we are constructing now, उसमें हमने horizontal axis को change करके time कर दिया है. इसमें दो चीजें understand करनी है. For a particle performing okay, first of all, in the first example, I'll start with the assumption let's assume that the mean position is taken as the reference point. ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल में ये कर रहा हूं और फिर सेकंड वाला एग्जांपल आई वुड पर्पसली वांट कि दोनों एग्जांपल्स हम लोग साइड बाय साइड डिस्कस कर लें. तो सेकंड वाले केस के अंदर लेट्स अज्यूम that any one of the extreme position is taken as the reference point. So for obvious reasons, the shape of the graph will change. I'll start with example one pehle. So since I'm using the mean position, so mean position pe I can take my time as 0. When the particle reaches the extreme position, I can write down my time as 1/4 of the time period. Then when the particle returns back to the mean position, I can write that down as half the time period. Marzia, give me a moment, beta. फिर मैं ऊपर shift कर जाता हूँ. Then as the particle goes to the other extreme position, I can write my time as 3/4 of the time period. And then when the particle returns back to the mean position, तो मेरा time हो जाएगा capital T. यार लर्न करने में एक मसला होगा एडम, एंड आई टेल यू कि लर्न करने में क्या प्रॉब्लम होगा. just hang on with me for another 5 minutes, तो मैं खुद लर्न करने में एक डिसएडवांटेज समझ में आ जाएगा.
So for this case, where the mean position is used as a reference, so if you make an attempt to construct a graph of, let's start with kinetic energy first. Now, since the horizontal axis is for time, तो for obvious reasons, मुझे time के लिए negative values की जरूरत नहीं पड़ेगी. So vertical axis for kinetic energy, horizontal axis for time. Time being a scalar quantity, negative portion नहीं आएगा. मैं time को देखिएगा किस तरह से mark कर रहा हूँ. So I'm labeling time as 0. Then quarter of a time period, half the time period, 3/4 of the time period, and 1 full time period. अब draw करते हैं. So from the diagram, I think you would agree. Time 0 के ऊपर, which is the mean position, kinetic energy will be maximum. अच्छा, क्वार्टर पे देखिएगा. Okay, sorry guys, are you still with me? मुझे लग रहा है मेरा कनेक्शन शायद ड्रॉप डाउन तो नहीं हुआ ना. You guys are still there? All right, ठीक है. So किसी ने लिखा है कॉस्ट का ग्राफ. रोहिल, फिर एक इशू है. कॉस्ट का ग्राफ नेगेटिव में जाता है ना, और एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव. तो टेक्निकली कॉस्ट की वर्डिंग यूज करना जरा गलत हो जाता है, बिकॉज द कॉस्ट ग्राफ एक्चुअली गोज इनटू नेगेटिव. सो quarter of a time period पे you would expect the kinetic energy to drop all the way down to 0. For correct wording, Rohil, I think ये कहना सही है कि it is a cost graph but constructed above the x-axis. I think वो wording अगर आपको cost कहना ही है ना, तो cost graph above the x-axis kind of sounds more reasonable. हाँ, जो रोहिल ने अब लिखा हुआ है, cost का graph above the x-axis, सही है. Then again, goes to its maximum. This is just for kinetic, mind you. 3/4 पे again drops down to 0. और इसके बाद दोबारा से maximum पे आ गया. Now, Adam, remember just a while back I said, यार थोड़ा सा बेहतर होगा कि आप learn मत करो, is because if I would have asked you to construct the same kinetic energy graph, Adam, but for the other situation. So I'm sure from the wordings itself आप recognize करोगे कि दूसरी वाली situation के अंदर थोड़ा सा stance change हो जाएगा. Because now I'm using my extreme position as my reference point. So diagrammatically, this is how the diagram would look like. So from the extreme position, it goes to the other extreme position. And then to complete its oscillation, it will return back as shown. तो फिर इसके अंदर एडम ग्राफ बिल्कुल फ्लिप हो जाएगा. सो अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन को अपना रेफरेंस कंसीडर करते हो, तो देन एट टाइम t is equal to 0, your graph will no longer start from maximum value, बल्कि रादर अब आपका काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ बिल्कुल ही उल्टा बन जाएगा. लेट मी जस्ट मार्क दीज वैल्यूज ओवर हियर. तो फिर इसकी बेसिस के ऊपर, ठीक है. सो आई थिंक शेप को लर्न करना इतना रेलिवेंट नहीं है जितना कि ये चीज भी याद रखना जरूरी है कि विच पॉइंट इज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट.
ठीक है, तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी का ही ग्राफ बना रहा हूं, लेकिन ये पूरा का पूरा ग्राफ अब काइंड ऑफ फ्लिप हो जाएगा. अच्छा, for the time being, I've only constructed graphs of kinetic, but I think you can all establish कि once आपका kinetic का ग्राफ बन जाए, तो पोटेंशियल का ग्राफ और टोटल एनर्जी का ग्राफ तो आप खुद ही बना लोगे. ठीक है, so the shape of the graph largely depends upon the fact as to which point have we taken or considered as our starting reference point. तो हाँ हुसैन, तुम्हारी वर्डिंग सही है, जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इन द प्रीवियस एग्जांपल. यस, सो ये काइनेटिक के बन गए हैं. पोटेंशियल को फ्लिप करके बना देता हूं. और टोटल एनर्जी का वंस अगेन कांस्टेंट हो जाएगा. ऑल राइट, तो सॉरी मर्जिया, यू वर सेइंग कि मैं थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करूँ ना, तो जस्ट लेट मी नो कि यार मुझे कहां पर जाना था मर्जिया. सो इज दिस फाइन और यू वांट मी टू स्क्रॉल बैक फर्दर? ऑल राइट, ठीक है. तो यार आई चेंज द स्लाइड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, दो तीन फॉर्मूलाज और भी करने हैं. सो द नेक्स्ट वर्किंग इज, अगेन पहले मेंशन कर दूं कि इसकी भी डेरिवेशंस नहीं चाहिए, जस्ट द डायरेक्ट फॉर्मूलाज. Formulas for calculating time period and frequency for a pendulum performing oscillations. Okay, before I move on to this, the formulas that we did on the previous slide, एग्जाम्स में उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और ये जो वर्किंग अभी करा रहा हूं, एक्सक्यूज मी, सॉरी यार, इसके क्वेश्चंस रिलेटिवली कम आते हैं, बट nonetheless formulas are a part of your syllabus, but more often than not the working done on the previous slide वो एग्जाम्स में ज्यादा आती है. So in terms of learning aspect of the formulas वो ज्यादा important है. So um, the first result is the formula for calculating the time period for a pendulum. डायग्राम भी बना दूं और फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि आपके पास पेंडुलम ऑसिलेशंस कर रहा है. So if you want to obtain the time period, then the time period for the oscillating pendulum is given by the following relationship. मैं सिंबल्स अभी लिख दूंगा.
So let me write down the formulas first. फिर symbols identify कर देता हूँ. So I think we stopped at formula number 13. मेरा ख्याल है. हाँ 13 पे स्टॉप किया था. ये 14th रिजल्ट हो गया. और टाइम पीरियड का रिजल्ट अगर ये है ना, तो आप इसको इन्वर्स करोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट मैं फ्लिप करके लिख रहा हूँ. जस्ट रिमेंबर वन रिजल्ट. तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला फिर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है. So in these results, L denotes the length of the pendulum, and G denotes acceleration of free fall. Okay, further आगे. Formulas for calculating time period and frequency for a mass attached to a spring oscillating in vertical plane. तो डायग्राम बना दूं, साथ साथ फॉर्मूला लिख लेता हूं. सिंबल्स भी फिर साथ में आइडेंटिफाई कर दूंगा. The diagram shows you a mass attached to a spring, and the mass is made to perform oscillations in the vertical plane. ठीक है, so diagrammatically this is how it would look like. Can we call this a linear frequency? कह तो सकते हैं रोहित, लेकिन जनरली बस फ्रीक्वेंसी का ही टर्म यूज करते हैं. बट येस इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी में कोई इशू नहीं है. हुज़ैफा ने लिखा हुआ है सिर्फ पूरी जिंदगी में इतने फॉर्मूलाज याद नहीं किए. हाँ यार, अनफॉर्चुनेटली ए टू में बहुत फॉर्मूलाज हैं. ओके, सो टाइम पीरियड के दो रिजल्ट्स हैं और फ्रीक्वेंसी के भी दो दो रिजल्ट्स हैं. तो टाइम पीरियड का रिजल्ट, ठीक है, मैं रिजल्ट्स पहले लिख दूं और फिर सिंबल्स बता देता हूँ. यार ये रिजल्ट्स एग्जाम्स में कभी कभी दे देते हैं, बट जनरली इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर वो नहीं भी देंगे तो आपको याद होने चाहिए. तो टाइम पीरियड का फर्स्ट रिजल्ट ये है. टाइम पीरियड का दूसरा रिजल्ट ये है. मैंने यार आज वाली क्लास के अंदर एक्चुअली सारे फॉर्मूलाज के साथ नंबरिंग भी करी है, इफ यू हैव नोटिस्ड. तो वो नंबरिंग इसीलिए करी है ताकि जब भी आपको टाइम मिले और आप लर्न करो तो एटलीस्ट फिर आप नंबरिंग के साथ उसको फॉलो थ्रू कर लेना. तो सिंबल्स पहले देख लीजिएगा. सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज.
फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड, अभी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है, फॉर अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग ऑसिलेटिंग इन द वर्टिकल प्लेन। इसके अंदर इनफैक्ट मैं पहले फ्रीक्वेंसी के आंसर्स लिख लूं, इसके बाद सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर देता हूं। तो यार फ्रीक्वेंसी के लिए बस फ्लिप कर देना। मैं सिंबल्स अभी आइडेंटिफाई कर देता हूं। बट एज ए सेड, एज अपोज टू द वर्किंग डन ऑन द प्रीवियस स्लाइड, वो वाले फॉर्मूलाज एग्जाम में प्रीडोमिनेटली बहुत दफा आते हैं। ये वाले रिजल्ट्स आते हैं लेकिन ये लेस फ्रीक्वेंटली आते हैं। सो लर्न करने के हिसाब से जरा वो वाले प्रॉपर तरीके से लर्न कर लीजिएगा, द वंस दैट वर डन ऑन द प्रीवियस स्लाइड। ओके यार, इसके साथ साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन बताता जाऊं। सो एम रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। नहीं रहा, थोड़ा सा कराना यार, आज थोड़ा ये काम करा दूं, फिर ओवर करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। G in this case is the acceleration due to gravity. एक सेकंड देना। अच्छा, E represents extension of the spring, and K represents the spring constant of the spring. ठीक है, ये भी रिजल्ट्स आ गए। मैं इनकी भी लेबलिंग जरा नंबर वाइज कर लूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। So I'm following the same sequence from the previous slide. ठीक है, ये रिजल्ट आ गया और एक और रिजल्ट है। तो वो भी करा दूं यार मुस्तफा, एक और रिजल्ट है ना बेटा, वो भी करा दूं ताकि ये एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर सिर्फ डैम्पिंग रह जाएगा। एक रिजल्ट और करा दूं। Formula for calculating time period and frequency for a mass attached with two identical springs and made to oscillate in a, sorry, you guys wouldn't believe, ये सारे formulas क्लास 10th की मैट्रिक के अंदर
ये सब कुछ है, एवरीथिंग दैट वी हैव डन इन दिस टॉपिक, ये क्लास 10 की फिजिक्स की बुक के अंदर है। सो क्लास 10 और क्लास 11 वगैरह के अंदर, सो वो मेट्रिक और इंटर के अंदर ये सारा कुछ ये लोग पढ़ के आते हैं। रिया नेक्स्ट वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा बेटा। I'm basically done with the major portion. सिर्फ डैम्पिंग का काम बच गया है, तो वो नेक्स्ट वाली क्लास में करा दूंगा। So formula for calculating time period and frequency for a mass attached with two identical springs and made to oscillate in a horizontal plane. Again पहले डायग्राम फॉलो कर लो। So this time there are two identical springs. A mass is positioned between them. And this time around, the mass is made to perform oscillations, but in the horizontal plane. तो आपका मास बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट वर्ड्स मूव कर रहा है। हाँ हुजैफा कराऊंगा। तो यार अब इसके अंदर रिजल्ट्स क्या क्या बनेंगे ना। सो वंस अगेन टाइम पीरियड का रिजल्ट, so one result for time period and likewise one result for the frequency. So time period is ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को कंपेयर करोगे ना विद द फॉर्मूला डन एट द टॉप, लेट मी जस्ट शो दैट टू यू, यू वुड रियलाइज ये वाला फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला डन एट द टॉप ऑलमोस्ट सेम है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूलाज की रिकग्निशन हो जाए ना। तो मैंने हाईलाइटर से शो किया हुआ है। रोहेल की वर्डिंग सही है। तो यार जो फॉर्मूला मैंने मार्क किया हुआ है ना, जरा देख लीजिएगा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, बट प्रीवियसली देयर वाज अ सिंगल स्प्रिंग, तो पहले के आ रहा था। नाउ द डायग्राम शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, तो वो 2 के आ गया। तो एरो तो खैर मिटा देता हूं। तो फॉर्मूला नंबर 16 and the one shown over here are kind of identical, with the only difference being कि यहाँ पर आपके पास दो स्प्रिंग्स हैं, hence the term 2k। ओके यार, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। और फाइनली इसमें दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ती नहीं है, बस इस पे फिर डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। बट वंस अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ, द फॉर्मूलाज डन ऑन स्लाइड 1 आर फार मोर एसेंशियल बिकॉज उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर लर्निंग एस्पेक्ट से देखते हो तो पहले प्लीज वो वाले सारे फॉर्मूलाज 1 थ्रू 13 या 1 थ्रू 14 जितने भी किए थे ना, वो जरा पहले लर्न कर लेना, उसके ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो फ्लिप करेंगे तो यार ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आ जाएगा, विच इज द लास्ट रिजल्ट। ठीक है गाइस, यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। रोहित 2E वाला भी फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, बट अदरवाइज तुम्हारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है गाइस, यहाँ ओवर कर रहा हूँ।
लेक्चर अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो बाद में कंपाइलेशन वगैरह कर लेना, और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में आई कंटिन्यू ऑन फर्दर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है यार, खुदा हाफिज़ सर, टेक केयर, क्लास ओवर कर रहा हूँ यार। देखते हैं कब खुलेगा, जैसे ही खुलेगा आप लोगों को अनाउंस करके बता दूंगा बेटा। यस इसबा, आई डू दैट। आज तो नहीं इसबा, कल सुबह में किसी वक्त भेज दूंगा बेटा इसके सॉल्व आंसर्स। ठीक है इसबा? हाँ श्योर, मैं कर लूंगा। मैं दोनों टॉपिक्स की भेज दूंगा, एज दिन कि मैं ग्रेविटेशन की भी सॉल्व आंसर्स भेज दूंगा और एसएचएम के भी भेज दूंगा आपके रिव्यू करने के लिए। नो इश्यूज बेटा, बट गिव मी टिल टुमारो। कल सुबह में आई हैव सम फ्री टाइम ना, तो मैं सुबह में भेज दूंगा बेटा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, यहाँ क्लास कंक्लूड कर रहा हूँ।